Hello to all students. So let's start with our new lesson, that is what is democracy and why democracy. तो स्टार्टिंग करते हैं अपने जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के साथ. द फर्स्ट जर्नल ऑब्जेक्टिव्स इज द लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल civic concepts such as democracy, citizenship and constitutional right. The second one is the learner will able to encourage ethical behavior and integrity in civic engagement. The third one is the learner will be able to empower students to exercise their rights and fulfill their responsibilities as informed and engaged citizen. The next one is the learner will be able to provide opportunities for practical applications and knowledge through stimulation and debates. सो हेयर आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये सिविक से रिलेटेड हैं और सारे के सारे सिविक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड ही जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दिए गए हैं. कहीं में भी जो है वो डेमोक्रेसी या अपने राइट्स या इसके बारे में नहीं, पर इन जर्नल जो है वो राइट्स जो है वो दिए गए हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्टरी की आइडिया. द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद voting, voters ID and the panchayat system along with the role of democracy. They already know about these basic things. And what is the performance indicator? Student will able to recall the concept of freedom and their rights and duties for nation. So with this, we have done with our journal objectives, introductory key idea, and performance indicator. The subject material is the textbook of social science. The material is blackboard, chalk, duster, pointer, real objects, your prints, etc. etc. The next start with our engage part. That will the pupil teacher will divide the class into three equal groups A, B, C according to the strength of the class. And then in explore part, he or she will give the material to the students and they will do the hand-on experience with discussion method and then write their observation on their copies. In the explanation part, student will write their observation on the board after telling to the whole class. So, what's the A group have observed? It is a voter card. The second has observed a voter can vote in EVM. So, of machine related to EVM. The third observation is both men and women are voting. Students will listen very carefully. Okay, more both men or women are voting. So this is how pupil teacher will correlate the topic and then announce the topic, that is what is democracy and why democracy. The fourth one is elaboration part. In this part, the different activities have to be done in the class. So for the first activity is pupil teacher ask one of the student to act as a king and the rest of all follow him for all good. What kind of rule is this? Rule of king. Okay, before starting with democracy, first of all, teacher is announcing the previous rules. मतलब पुराना कंसेप्ट क्या चलता था राजाओं महाराजों में. तो अगर एक किंग है तो बाकी आजकल तो किंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. आजकल हम इंडिया में किसी को बोल सकते हैं कि ये यहाँ का राजा है या रानी है, तो नहीं बोल सकते हैं. पर जब ऐसा बोला जाता था तो वो क्या था? A kingdom that is ruled by a king. The second activity is pupil teacher will organize an election campaign by a student as leader and involving other student to cast their vote. So ऐसा एक आप दो स्टूडेंट्स को खड़ा करके एक इलेक्शन जो है वो क्लास में करवा सकते हैं फॉर क्लास मॉनिटर एंड ऑल अबाउट दैट. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हम इलेक्शन प्रोसेस से चूज करना बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका इलेक्शन आ गया. द थर्ड एक्टिविटीज पीपल टीचर विल प्रोवाइड अ preamble to students to read loudly for the rest of the class. Student will act as B.R. Ambedkar. Okay. तो यहाँ पे एक बच्चा जो है जो भी जीतेगा वो उसको प्रियम्बल पढ़ेगा. तो व्हाट इज द गवर्नमेंट represent democracy. The fourth activity is pupil teacher will organize an election on the polling booth
made in the class and ask few students, a boy, to cast their vote. तो यहाँ पे वोटिंग करवाई जाएगी. How election process is called a polling booth without any discrimination. So the students above, or the person who is above 18, he or she will cast their vote without any discrimination. Either he is a boy, either he is a girl, or is other aspect. तो तीन तरीके के जेंडर होते हैं, ही, शी एंड अदर. तो तीनों के बारे में, मतलब अगर आप किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आप वोटिंग दे सकते हो अपनी 18 साल के बाद. उसके बाद है पीपल टीचर विल इन्वॉल्व होल क्लास इन ग्रुप डिस्कशन एंड हेल्प टू इवेलुएट. तो ये आपका इवेलुएशन प्रोसेस आ गया, और इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ए ग्रुप बी ग्रुप से पूछेगा. यहाँ आपके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. ए ग्रुप ने पूछा है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया. तो ग्रुप सी ने आंसर दिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सी ग्रुप ने पूछा है व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो ग्रुप बी ने एक्सपेक्टेड आंसर दिया है रूल बाय पीपल. ओके. ग्रुप बी का है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो ग्रुप ए ने आंसर दिया है सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ अ कंट्री रूल ऑन अ स्टेट. Okay, so this is how group discussion happen, and these are some drawings that you can make on your copy. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसी मुश्किल लग रही है इस पूरे लेसन में, और इस लेसन को हमने पर्टिकुलरली दो पार्ट्स में बनाया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो दिस इज द ए पार्ट ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा अभी थोड़ी टाइम बाद. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, please message me in the comment box. Thank you so much.